Looks like everyone's gone. Better head to the common room. हमारे YouTube चैनल Yesweplay पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त NK राजपूत। नेक्स्ट एपिसोड लेकर आपके सामने हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो हमें अपने कॉमन रूम में जाना है। Now, which way is the common room? तो पहले एपिसोड में आपने देखा कि हम जहाँ हॉगवर्ट्स में पहुँच गए और हमें ग्रिफिंडोर हाउस मिला है और स्कूल आते वक्त हम पर हमला हुआ था। तो उस हमले के बारे में भी जानकारी इकट्ठी करनी है कि वो हमला हम पर किसने कराया था। अभी हमारा इतना लेवल नहीं है कि हम ये चेस्ट खोल सकें, अभी तो शुरुआत ही है। Must be different starting Hogwarts in your 5th year. Revelio. ये रिबेलियो जो स्पेल प्रोफेसर फिग ने हमें सिखाया था, ये चीज़ों को जो है ढूंढने का काम आएगा। तो हमें कॉमन रूम्स में जो है अपने 3 स्टूडेंट से बात करनी है, क्रेसिडा, गैरेथ और नेली। इस रूम में किसके पास चलें? उधर चलते हैं, उस लड़की के पास। नहीं, अभी नहीं खुलेगी, लेवल नहीं है इतना हमारा अभी। Revelio. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello इसका there. जादू काम नहीं Welcome कर to रहा है, Gryffindor. ये जो I'm जादू करना Cressida. चाह रही है। Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did a study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation. दरअसल This is इसमें proving कमेंट्री a करने का bit बहुत trickier. कम समय मिलेगा क्योंकि ये बातें बहुत होती हैं इस गेम में। I'd say your wand work could be a bit more fluid. My wand work is fine, thank you. I can cast spells more complicated than this one without speaking. I'm just going to keep at it. बहुत हो गई बातें यार, ज़्यादा नहीं करते। गुड लक बोलो इसे। Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. तो आज हमारा पहला दिन है हॉगवर्ट्स में, तो नए दोस्त बनाने हैं। Revelio. देखते हैं कौन कौन दोस्त बनता है हमारा। That girl thinks she I think can get Madam away she with gets anything. bolder every year. ये कौन है? Have a sip. Go on. Sure you don't want to try it? गैरेथ बीजली। Brewed it myself. Hello. You're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt.
Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if तो I'm a first प्रोफेसर year. बेजली जो है Keeps वो too इसकी close an eye आंटी on हैं। me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference fundamentally between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my आपसे एक बात कहनी creativity थी। as much as you might think. मैंने आपसे पहले एपिसोड में भी पूछा था कि जो मैं हिंदी में सबटाइटल डाल रहा हूँ क्या ये मैं कंटिन्यू रखूँ डालने। Are you having butterbeer तो for breakfast? आप लोगों से मैंने कमेंट्स में Oh, पूछा no. था कि कमेंट्स I've कर been देना। perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more अगर work. रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं नहीं डालूंगा क्योंकि इनमें मुझे Well, it was बहुत टाइम nice लगता है meeting you, डालने में। Gareth, and thank you for the insights on your aunt. तो Pleasure to meet you as well. ये Good luck सब कुछ today. आपके ऊपर है। जितना आप सहयोग करेंगे उतना ही मैं मुझे जो है टैग डालने में खुशी होगी। Shame you weren't born with Nelly wings would do there. anything for I'm attention. sure you'd use them. ये ऊपर जो लड़की है इससे बात करनी है। Who does Nelly think she आ is? जाओ मैडम। I shan't offend you. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nelly, by the way. Nelly Ogspire. I've heard Nelly rumors about what happened to Ogspire. you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? क्या कहें यार, सब उसी के बारे में पूछ रहे हैं। पता कैसे चला इन सबको? प्रोफेसर ने मना करा है बताने के लिए। अब बताना तो पड़ेगा। our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. ये बहुत रोमांचकारी लग रहा है। You've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. किसी की जान जाते जाते बची है और एक की जान चली भी गई है। What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. Nice to meet you. बस और नहीं पूछते यार, क्या पूछें कुछ I'd और। imagine चलो। most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. New Gryffindor. तो इन तीनों से तो Professor बात हो गई Weasley's हमारी। waiting for you outside the common room. प्रोफेसर वीजली से मिलना हमें, और हमारे कॉमन रूम से बाहर हैं। तो प्रोफेसर वीजली के पास चलते हैं और देखते हैं वो क्या जानकारी देंगी हमें। Good morning. I trust Good you're ready morning, for your teacher. first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the इस year. गेम में बातें बहुत हैं यार। OWLS Yes, Owls. your ordinary wizarding level exams. बहुत They will लंबी। determine what type of career you can have when you leave here.
After Meaning, much sir? discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what Field you are guide. learning so that you master all that's ये expected हमारे of a fifth पूरे year. गेम की नॉलेज बुक है। You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. गेम का इसकी पूरी हमें सब कुछ यहीं से मिलेगा Thank you, नॉलेज गाइड Professor, से। but what do you mean it will keep track of है what ना I'm फील्ड learning? गाइड। Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to Revelio. practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up! Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply Revelio. press Revelio on it, and we'll see what the guide says. तो ये गाइड हमें जानकारी प्रोवाइड कराती है। तो फील्ड गाइड पेज अब हमारे यहाँ पर हमारी सारी नॉलेज होगी। मैप, क्वेस्ट, जो हमें मिशन मिलेंगे, जो हमें वेपन्स मिलेंगे, वो सब चीज़ इसमें यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। ये सब देखो फील्ड गाइड पेजेस। Revelio. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. Revelio. अभी तो सब कुछ लॉक है। ये खुल जाएगी? हाँ, ये खुल जाएगी। Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use Floo Flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall.
ये मैप अनलॉक हुआ है। वो मैप को भी इन्होंने हर उसमें बांट दिया है टुकड़ों में। ये हमारे फास्ट ट्रेवल पॉइंट है जो हमें अनलॉक करने होंगे। साउथ विंग का शायद अनलॉक हो गया है, एक हुआ है। में एक फास्ट ट्रेवल हमारे लिए प्रोफेसर बिजली ने अनलॉक कर दिया कॉमन रूम का। तो हमें यहीं पर जाना है, सेंट्रल हॉल के। सेंट्रल हॉल, और सेंट्रल हॉल में है ये वाला फास्ट ट्रेवल। तो चलें। And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. तो हम यहाँ से सेंट्रल हॉल से You can get almost पूरे anywhere in हॉगवर्ट्स the में कहीं भी जा castle सकते हैं quickly from Central Hall. फास्ट ट्रेवल करके। Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's तो Cross station, ये so to speak. एक तरह से समझ लो दिल है इसका, हॉगवर्ट्स का सेंट्रल That हॉल। should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure तो you आज get to हमारी दो क्लासें Hogsmeade हैं, as soon as चार्म्स possible क्लास है to और replace the एक supplies you lost on the way here. डार्क आर्ट्स की क्लास है। उनको लेने के बाद हमें हॉग्समीड भी जाना है, जहाँ हमारा जो What will I learn in सामान Charles लेकर आना, class? जहाँ से हमें Exactly अपना what you might expect. जो हमारा जो सामान खो गया था ना ड्रैगन के हमले में, उस सामान को हमें लेकर आना है, खरीद कर लाना है अपनी जरूरत की चीजें। He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who इस aspire गेम to में become हमारी warriors. Fortunately, we are lucky एक to तरह have ट्रेनिंग भी ever चलती gifted रहेगी साथ Professor साथ में Hecat क्लासें, in और charge of our students' उसके साथ education ही in that मिशन भी regard. चलते रहेंगे। You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. तो जो हॉग्समीड है वो यहाँ का सुपरमार्केट समझ लो एक तरह से, जरूरत की सब चीजें वहाँ पर मिलेंगी। Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have पर्सनल much भी to और learn. स्कूल में यूज होने वाली भी, Happily, your professors have agreed to create additional assignments for एनीथिंग you outside सब of कुछ वहाँ class. मिलेगा। You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor.
He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. यार मैडम हमसे वो जानना चाहती हैं जो हमारे साथ I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's यहाँ all there is आते to वक्त it. हुआ है। प्रोफेसर ने हमसे मना करा है, तो हम इन्हें नहीं बताते हैं कि क्या हुआ था। चलो Speak of the प्रोफेसर devil, भी आ गए, Professor जान बची। Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I ठीक rely है। on you, Professor Fig, to explain the details जाइए, of आप the भी अपनी field क्लास guides लीजिए और map? हम भी अपनी क्लास Of लेंगे। course. Thank you. और प्रोफेसर फिग हमसे कुछ Good luck today. फील्ड गाइड के बारे And में हमें remember जानकारी to देंगे, use your कैसे उसे field यूज guide. करना है। It will be invaluable to you. ये फील्ड गाइड हमारी And सब कुछ है। invaluable to me, मैप as इसमें I'll be मिलेगा, using it to keep up to हमारे date on your मिशन इसमें progress. मिलेंगे, Yes, Professor. Come हमारी and जरूरत find की me सब in my चीजें इसमें classroom मिलेंगी। after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. मैडम तो गई, Revelio. प्रोफेसर फिग कहाँ गए? वो भी तो यहीं खड़े थे हैं। It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she प्रोफेसर हमने suspects बताया that तो we're कुछ not नहीं being उन्हें। entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. ठीक है, अब हमें प्रोफेसर बीजली ये फिग हमें फील्ड गाइड पेज के बारे में बताएंगे। तो हमारी 2 मिशन स्टेम ओपन है, और ये जो येलो से निशान बनकर आएंगे सील्ड टाइप के, ये हमारे मेन मिशन होंगे। एस्ट्रोनॉमी विंग में 6 चेस्ट हैं, 23 फील्ड गाइड पेज हैं, और डैमेज स्टेचू हैं इसमें 3। तो कौन सी क्लास लें पहले? चार्म क्लास लेते हैं या डिफेंस में मिलेगा हमें लेबियोसा, और चार्म क्लास में मिलेगा हमें एक्यो। तो चार्म The क्लास map में is चलते हैं। enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand.
You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. I think I'd have made an excellent speaker. I have a sharp eye. Can spot the shadow of the demiguise in the snow. I'd make a fine keeper with a bit more practice. I wish I was an animated that could fly. A raven or an owl. तो ट्रैकर हमने लगा दिया। अब इसी को फॉलो करते हुए चलते हैं हम अपनी चार्म क्लास में और देखते हैं वहाँ पर हमें क्या सिखाया जाएगा। भूल भुलैया है ये, रास्ते भी जल्दी से याद नहीं हो पाएंगे इसमें। अरे किधर जा रहा भाई? अरे 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 नीचे जाना यार, यहाँ से जाना है। Revelio. इस गेम में मैंने अभी तक जितना एक्सप्लोर करा है, मुझे थोड़ी इसमें एक चीज़ अजीब लगी इस गेम में। वो है जब हम डोर के पास जाते हैं, डोर खुलने में काफ़ी टाइम लेते हैं। नहीं तो डोर एकदम खुल जानी चाहिए। Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Should be kept. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? क्या बात है? Welcome to year 5 of charms. Professor, now, this will be a crucial year in your education on थोड़े the moody art of type के charm लग रहे work. हैं। But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the प्रोफेसर तो आते ही शुरू हो गए भाई। between the incantations of the color change and growth charms? बच्चों के सर के ऊपर से निकल गई बात। Anyone? अरे किसी को नहीं पता, सब छुट्टी में भूल गए। afraid it is too late to study now. रिवीजन कराओ सबको ना, My, the summer months must ये have सब really भूल taken गए। a अब toll on you all. छुट्टियों में सब भूल जाते हैं, छुट्टियों में कोई याद नहीं रखता कुछ भी। You all spent your holidays practicing obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. तो एक और सिखाया जाएगा अब हमें, और ये ऐसा होता है दूर की चीज़ को अपने पास करना, अपने पास खींचना उसे। अगर कोई चीज़ दूर है तो उसे अपने पास लेकर आना। ये That Good. is not bad. You are a swift learner.
I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. जी हाँ, पता है। Very good, everyone. That's जितना enough of ज्यादा that. अभ्यास करेंगे उतने ज्यादा As you all परफेक्ट seem to बनेंगे। have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. चलो भाई, चलते हैं प्रोफेसर के साथ, देखते हैं कहाँ कराएंगे हमें ये प्रैक्टिस। कहीं मैदान में ले जाकर कराएंगे शायद, बाहर। I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? तो प्रोफेसर क्या कराना चाह रहा है हमसे? So why don't we have our newest students start us off? क्या करना है? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall. Yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. 30 Show us how it's done. और कितना है? 20, 10 है क्या? 10, 20, 30, 50 शायद ऐसे ही है। तो हमें ये जिस नंबर पर आकर रुकेगा उतने पॉइंट हमें मिल जाएंगे। तो हमारा रुका है 30 पे आकर, पहली वाला। और ये गेंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए, देखते हैं कंट्रोल कर पाते नहीं कर। वो 50 ठीक है। Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. पता तो तभी चलेगा जब दूसरे से मुकाबला होगा कि हम कितने अच्छे हैं किसी चीज को करने में। Yes, sir. What's this? तो ओनाई खेल रही है रेड बॉल से, हमारी है ब्लू। ओनाई ने बनाया 30 पॉइंट। हमें इतना हिसाब से खींचना है कि ये बाहर न गिरे इससे। और ओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 50 20 पॉइंट तो फिलहाल अभी ज़्यादा है। लो भाई, इसने 50 स्कोर करा आपके। ओ रुक जा रुक जा। हाँ यार, 0 पॉइंट मिलेगा हमें। अब तो होना ही जीत जाएगी हमसे। नहीं भाई, अब तो कोई चांस ही नहीं है। उसने 2 50 बनाए हैं और एक 30 है। हमारे 50 है, अगर हम 50 भी लाते हैं तो भी 30 पॉइंट से जीत जो है हार जाएंगे। और रुक जा। बड़ी बुरी मात मिली भैया हमें तो। बेकार, हम किसी काम के नहीं है। Let us make this a bit more interesting, shall we? तो अब क्या करा है प्रोफेसर ने? और वो बना दिया पेचीदा से। इन दोनों चलते हुए के बीच में से हमें निकालने हैं।
focus now. You will need it. This round settles देखते it हैं all. आपका कौन जीतता है इस राउंड को। तो पहला टर्न किसका है? ओनाई का। तो हमारी ब्लू है, तो चलें शुरुआत करें। अब Accio. ओनाई ने 50 बनाए, हमारे भी 50। Very good. Let us see this. अरे 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 30। अब हमारा नंबर है, रुक जा 50। Nicely done. हमारे 100 पॉइंट है और ये बनाया मैम ने 30। 110। Accio. क्या बात है, Score. Remarkable. परफेक्ट 150। आपका तो हम जीत गए। Very good, both of you. Well done. अब और कुछ है या हो गया? आई थिंक फिनिश। तो आज हमारी चार्म क्लास शायद Class is पूरी हो dismissed. गई। Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become तो proficient with ओवरऑल Accio. विनर हम हैं। Took weeks for me to get anything right when I transferred ओनाई here. ने एक ही राउंड तो जीता, It gets easier, I हमने promise. 2 राउंड जीते। तो फाइनल स्कोर That's good to hear. हम विजेता हैं। It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is तो here? ये पहले किसी और कॉलेज में पढ़ती थी But I did जादूगरी have to के। learn how to use a wand when I arrived ये here. वहाँ से ट्रांसफर होकर Hardly यहाँ आई everyone है at Wagadu uses one. जब इसकी मॉम को यहाँ जॉब मिली है। तो You can cast Oh. spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। It's nice to learn about another wizarding school. Thank you मैं for इस asking. गेम के साथ साथ I एक do गेम miss और Wagadu, but I am glad to be here at शुरू करना Hogwarts. चाह रहा हूँ इस पे। I think स्टोरी Professor मोड Ronan गेम ही wants है, to talk to you. Better not keep him waiting. लेकिन थोड़ा पुराना है। Until next time. प्लान कर रहा हूँ मैं You can use Accio on उसको humans. A word if खेलने you के were लिए। So inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. देखता हूँ क्या your बनता है। first charms lesson lived up to इसके साथ साथ expectation. मैं सोच रहा हूँ उसी की An भी outdoor एक competition वीडियो wasn't exactly the lesson I was आपके लिए expecting, लेकर sir. आऊँ। What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment तो that I am प्रोफेसर विजली ने preparing for you. सभी प्रोफेसरों से बात करी है हमें एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए, जिससे हमारी जो पढ़ाई अधूरी रह गई है
वो पूरी हो सके, हम अपनी क्लास के बच्चों के साथ हो सकें नॉलेज के बारे में, क्योंकि वो पिछले 4 साल उन्होंने सीख का है, हम डायरेक्ट 5th में आए हैं, तो थोड़ा कहते हैं ना उसे सीखने में टाइम तो लगेगा हमें। तो प्रोफेसर बिजली ने जो है सही प्रोफेसर से बात करके हमें एक्स्ट्रा क्लासेस देने की रजामंदी ले ली है उनसे, तो सभी हमको एक्स्ट्रा क्लास देंगे और अपने कुछ असाइनमेंट हमसे कराया करेंगे। तो दूसरी क्लास भी ले लेते हैं, वैसे वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी, लेकिन चलो ले लेते हैं दूसरी क्लास भी। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स, यानी कि काले जादू से रक्षा करना, शायद अपने आप को बचाना दूसरे जादूगरों के हमलों से, शायद वही सिखाया जाएगा। कुछ नहीं है यहाँ। जादूगर का जादू है हाथों का कमाल। Revelio. ये है हमारी दूसरी क्लास। ये क्या बात है, छड़ी युद्ध चल रहा है यहाँ। सेविस्टेंट सालो। ओए ओए, Professor Hecat! Perhaps you'd be अबे good enough to गई थी blast each खोपड़ी other to काम से। pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one. क्या एंट्री मारी है प्रोफेसर ने। It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. तो मैडम कौन सा स्पेल सिखाएंगे हमें? Levitation charm. Levioso. लेवियोसा। A ये surprised opponent is a weak opponent. Care to अपने defend दुश्मन yourself, को या Master किसी भी चीज Courage को there? हवा में उठाना। One thing I've learned as an पहला unspeakable सीखा is the हमने दूर की value चीज of को अपने पास simplicity, करना। especially in the heat of battle. Now, दूसरा अब सीख रहे let's हैं हम practice what we've just learned. किसी को भी Starting हवा with में something उठाना। small. चलो ट्राई करें। Levioso. लेवियोसा। Now, let's try something a little larger. इस पे प्रैक्टिस करनी।
पहले लगा लेते हैं उसे स्पेल को। ये ऑटोमेटिक लग गया? नहीं, लगाना पड़ेगा ना। परफॉर्म बेसिक कास्ट R2। ये सील्ड है, देखो इसके ऊपर चढ़ी हुई। ये सील्ड लेवियोसा से टूट जाएगी। पहले हमें लेवियोसा कास्ट करना पड़ेगा, उसके बाद बेसिक कास्ट से हम इसे हमला करेंगे। क्या हम सारे एक साथ यूज कर सकते हैं? शायद। चले करें। थोड़ा प्रैक्टिस होने में हाथ को ना वो थोड़ा टाइम लगेगा। और ये बड़ा कंफ्यूजन होगा कि इसमें एक साथ कई सारे स्पेल यूज करने पड़ रहे हैं। और हम दोनों आपस में लड़ेंगे। This should be easy. Levioso, this can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. If only all of my students were this adept. Levioso! I do enjoy life in duel. अरे भाई प्रोटेक्ट भी करना अपने को। प्रोटेक्ट को लगाओ अपना। When your opponent's guard is down. खाली बाहर ही नहीं करना, दूसरे के बाहर से बचना भी है हमें। ये थोड़ा अगर होल्ड कर लेता तो। अरे हमारी हेल्थ भी जा रही भाई, उसके बाहर को रोको। Not bad हो for a गया? beginner. You give as good as you get. तो हम दूसरी क्लास में ही विनर है। I put you on the spot and you rose to the challenge. पहली क्लास के भी विनर थे हम और दूसरी क्लास के भी विनर हैं। Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. तो प्रोफेसर हैकेट भी हमें एक्स्ट्रा क्लास देंगी, ये भी हमें असाइनमेंट देंगी। तो ठीक है, हमारे लिए अच्छा है कि टीचर हमें एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं हमारी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library. You just have to be clever enough not to इनका कोई सीक्रेट ड्यूलिंग क्लब है जिसमें ये आपस में ऐसी फाइट करते हैं Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you और soon. कुछ नियमों को तोड़ते हैं और मानते नहीं है उन्हें। जहाँ नहीं जाना है वहाँ भी जाते हैं, ज़्यादा प्रतिबंधित एरिया होती हैं कुछ, लिखा होता है नो एंट्री, लेकिन ये लोग वहाँ भी जाते हैं।
तो ये हमसे कह रहा है कि तुमने अच्छी फाइट करी है तो तुम हमारा क्लब ज्वाइन कर लो। तो देखेंगे बाद में अब क्या करना है हमें। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जाते जाते आपसे यही कहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ में जो घंटा है उसे बजा दो, जिससे आपको हमारी वीडियो की चिट्ठी आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।